if vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular, show that vector C cross multiplication vector A cross multiplication vector B is equal to 0 is converse true. Cross multiplication of vector A into vector B will be magnitude of vector A, magnitude of vector B, sin theta, theta is angle between A and B, that is 90 डिग्री, और इसकी एक डायरेक्शन एक n यूनिट वेक्टर that will be perpendicular to the plane of A and B, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन 90 n कैप ए बी इंटू 1 n कैप और ए बी n कैप. n is perpendicular to the plane comprising A and B, so unit vector n will be parallel or anti-parallel to vector C. Angle between unit vector n and C is equal to 0 degree or 180 degree. Suppose this is alpha. तो वेक्टर C क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को हम लिख सकते हैं C वेक्टर क्रॉस AB यूनिट वेक्टर n, AB C वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ n और AB C magnitude of vector C, magnitude of vector n and sin alpha. ए बी सी अगर 0 है तो साइन 0 डिग्री और एंटी पैरेलल है ए बी साइन 180 डिग्री. In both case this will be 0. Hence C cross A B vector is 0. This is proved. Next is converse true. Converse means इसका उलट अगर दिया हो C वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर इज 0 देन ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. जो कन्वर्स होगा इफ C वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A vector cross B vector is given at 0, then A vector, B vector and C vector are mutually perpendicular. C vector cross AB vector into B vector is given as 0,
suppose A cross B, A and B vector are parallel vector, then A cross B will be AB sin 0 or AB into 0 is equal to 0. अगर AB पैरेलल हैं तब भी C क्रॉस A क्रॉस B is 0. Hence, it is not necessary that A, B, C are mutually perpendicular. It means कि converse is not true. Converse is not true.